Good evening, team. Hi, this is Mani from Commodity and Currency Desk. Today we are going to talk about NSE. That's the National Stock Exchange in which gold mini, the contract is there, in which much more liquidities are there nowadays. After the Ukraine and Russia war, clients are much more participating in gold and silver. So we have today Mr. Hitesh sir from NSC. He will going to talk about what are the opportunities are there in market and how the client able to trade by using several strategies. I don't want to take much more time. Let me hand over the call to Hitesh sir. Hitesh sir, please take over from here. Thank you, Mani. Yeah. And thank you to everyone who has joined us today. Namaskar. My name is Hitesh Sethia, and I'll be with you for some time on what all is happening these days in options with specific reference to NSE Gold Mini options. So we'll discuss about a few important perspectives that how people are actually using it. Okay. The minute you are able to understand that how market participants are using it, my side is to make you aware about such important updates. Once you are clear with what is happening, how people are, what is happening in markets, specifically in reference to gold, and once you are able to understand that how people actually uses along with what is happening in the market, how people are actually using the NSE's platform for gold mini options, I believe you along with Mani, you along with the entire IFL research team, Devesh, you are practically being equipped to start using gold mini options. Okay, so a combination of what is happening these days and how people are actually using options is what my part is. Let me tell all of you, today's session is going to be a bit technical because I believe 3-4 sessions from last 12-13 months I have conducted, particularly on basics of gold mini option, what the product is, how people are, what are the features of the project, margining and ABCD, all that stuff. But today we are actually going to understand with the data which is at the moment in the market, that how to use it. Okay, the crisp is कैसे लोग इसको देख रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, यही ऑब्जेक्टिव है. सो एक काम करते हैं हम लोग, लेट मी शेयर द स्क्रीन. My disclaimer is applicable. I'm not going to speak to you anything on ये खरीद लीजिए, ये बेच दीजिए. It's a standard disclaimer of National Stock Exchange which talks about that the sole objective is to make you understand the importance of financial education. Right? As an exchange, we are not into giving any tips, any strategies to you. Okay. But yes, education is must, because ultimately market is all about knowing it better through education. So education is a big spectrum, and we are going to talk a bit about it, a little technical side of gold mini options from that perspective. So एक काम करते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, and then step by step we'll move on. Okay. Mani, is my screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. That's clear. So that's the exchange portal, free to use. आप कभी भी जा सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, और यहाँ से हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट, विच इज आउट हियर, जो मैं लिखता हूँ option-price.com. देखिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जिन लोगों के साथ आज मैं बात कर रहा हूँ उनको कॉल क्या है, पुट क्या है, कॉल कब खरीदना है, पुट कब बेचना है, पुट कब खरीदना है, कॉल कब बेचना है, ये पता है. तो आज ना इससे 2 स्टेप हम ऊपर जाएंगे और ये समझेंगे कि कैसे इस समय पे कैसे लोग काम कर रहे हैं और क्या करेंगे. रादर देन गोइंग विथ अ यूजुअल फ्लो, एक नोटपैड में ओपन करूंगा एंड विल राइट डाउन दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है. सो नो प्रेजेंटेशन. ओके, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे चीजें, समझेंगे चीजें और उसके नोट्स बनाएंगे, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू.
Okay, so let me also use a notepad. All right, seems good. Okay. चलिए, सो पहला एग्जाम्पल समझने के लिए मैं बेसिक आज नहीं ले रहा हूँ। मिनी ऑप्शन 100 ग्राम रहता है, फ्यूचर की डेट पे एक्सपायर हो जाएगा, इन द मनी कॉल ऑप्शन डिलीवरी में चले जाएंगे, इन द मनी पुट ऑप्शन डिलीवरी में चले जाएंगे, ये सब आपको पता है। और अगर इन केस आपको नहीं पता है तो माय रिक्वेस्ट इज टू गेट इन टच विथ मनी देवेश, right? We'll organize a specific session for you and your people on basics of gold mini options, but आज अलग करें। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आज गोल्ड का भाव 50,000 चल रहा है, अंडरलाइन प्राइस। ओके, मैं एक पोर्टल यूज कर रहा हूँ एज एन एक्सचेंज, वी आर नॉट एसोसिएटेड विद देम, but just to provide you right side of education for options, I'm using it, I'm not promoting it. Okay, 50,000 प्राइस है। ओके, अब मैं बोलता हूँ 50,000 का ही कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। 50,000 प्राइस चल रहा है किसका? गोल्ड मिनी का। ओके, और 50,000 के ही कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। मान लीजिए 30 दिन एक्सपायरी के बाकी हैं, हम लोग इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं लेते हैं, डिविडेंड यील्ड गोल्ड से कुछ होता नहीं है, और मान लीजिए 12% की वॉलेटिलिटी चल रही है। विच वॉलेटिलिटी? इट इज कॉल्ड एज ऑप्शंस वॉलेटिलिटी। आप सभी ने सुना होगा इसको, आईवी या इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं, आईवी या इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। ओके, राउंडिंग ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस में कुछ भी लिख सकता हूं। और अब मैं बोलता हूं सिस्टम को कि कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेट क्या करेगा? ये बताएगा कि अगर 50,000 का भाव चल रहा है, 50,000 की एक्सरसाइज प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस है, 30 दिन एक्सपायरी के बाकी हैं, और वॉलेटिलिटी बाजार में 12% की चल रही है गोल्ड की, तो कॉल ऑप्शन का क्या भाव होना चाहिए, है ना? क्योंकि एक यूजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे हमेशा कि मान लो 50,000 का भाव चल रहा है, 50,000 की स्ट्राइक मैंने खरीद ली है, तो कितना भाव चलना चाहिए? तो 4 पैरामीटर्स के थ्रू आप कभी भी कोई भी ऑप्शन के प्रोडक्ट की का प्रीमियम जो होना चाहिए वो पता कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपको? अंडरलाइन प्राइस मतलब स्पॉट प्राइस जिसको आप बोलते हैं, एक्सरसाइज प्राइस मतलब जिसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, नंबर ऑफ डेज फॉर एक्सपायरेशन कितने दिन एक्सपायरी के बाकी है वो, और चौथा वॉलेटिलिटी। ये 4 के थ्रू आप ये ढूंढ पाएंगे कि कॉल ऑप्शन का भाव कितना होना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक का? 50,000 वाले कॉल। ठीक है, अब मैं इसको जाके कैलकुलेट करता हूं। जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 686.21 ये बताता है कि अगर 12% की वॉलेटिलिटी चल रही है तो 686.21 ये आपका गोल्ड ऑप्शन का 50,000 वाला कॉल का भाव चलना चाहिए। ओके, 50,000 का भाव चलना चाहिए, है ना? अभी मैं पुट पे नहीं आता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो 30 दिन बाकी थे, ठीक है, और 50,000 की प्राइस ली थी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे नोट्स में बनाता जाता हूँ, राइट? यूपी स्टैंड फॉर अंडरलाइन प्राइस, मैंने लिख दिया 50,000। स्ट्राइक प्राइस मतलब एसपी, यहां भी मैंने लिख दिया 50,000। ओके, नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग आरईएम जो है वो है 30 डेज, और वॉलेटिलिटी जो मैंने ली है वो ली है 12% की। ओके, वॉलेटिलिटी जो मैंने ली है वो ली है मैंने 12% की। मैं समझ गया हूं ये बहुत छोटा दिख रहा है अभी आपको। लेट अस इंक्रीज टू 18। ओके, ठीक है। अगर मैं ये करता हूं तो मेरी जो प्रीमियम आती है वो आती है 686 के आसपास। ओके, केस नंबर 1। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 686 की प्रीमियम पे कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, यू हैव बॉट अ कॉल ऑप्शन एट 686। क्यों बाय किया है? क्योंकि आपको लगता है गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए आईएफएल रिसर्च से आपको बोला, देवेश जी ने बोला, या मान लीजिए मनी ने बोला कि भाई रिपोर्ट में आज गोल्ड जो है वो पॉजिटिव है। ओके, और अगर पॉजिटिव है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। आप जब कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, रिस्क आपको पता है, रिटर्न्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊं। सो जैसे ही 50,000 था, 686 का प्राइस था, प्रीमियम था, यू बॉट, ठीक है, आपने ये बाय कर लिया, ये प्रीमियम पे आपने 686 पे बाय कर लिया। लेट मी मार्क
It is, sir. The presentation should be combination of Hindi and English better. Yeah. Oh, Yeah, yeah. noted. There was one request that's the reason. Yeah, yeah. Yes. Okay. Yeah. So now the point comes up. Suppose when the underlying price was 50,000, you bought a call option of 50,000. 50,000, 50,000, both. Okay. Now on the same day, you have an expectations, or the research call says that gold price is expected to increase by 200 rupees, by 200. So what you will be doing? You should use this portal, right? Say 5,200. Okay. That means if the price today itself changes to 5,200, what will be the premium? So based on the view, based on the research, you bought a call at 686, but the question, the minute you bought a call, you had the second question saying, if the price becomes 5,200, what will be the premium? So that at that premium, I will be able to square. At that premium, I will be able to square. So what I'm changing is everything remains constant. Okay, I change it to 5,200. I change it to 5,200. Okay, and I will again go and recalculate it. Now it says that if today, if underlying price goes up to 5,200, okay, the premium will become 792. Okay, so I'll go back. Okay, this is my second part, a bit lower on the side, 50200, right? Strike price, so underlying price, strike price, same. Okay, right? All same, right? But now the premium is 792. Okay, the premium is 792. If it becomes 792, which says that yes, the probability is quite high. If the underlying price moves up by 200 rupees, okay, my gain in this example is the difference of 792 is the premium at which I will be selling it off, right? And 686. Okay, that's my gain. Okay, you may simply calculate it. Okay. Okay, how much it comes to practically speaking? 106 approximately. Okay, but you can always do it. Okay, right. So my gain will be 106 rupees on 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 an investment of 686 rupees. Okay, you can always multiply with lots. Okay, now suppose if you have an expectation that the underlying price may go up to 500, may go up to 5,500. I changed it, right? I will on the same day, no change in date. I will calculate it, and it says in that case the premium will be 968. In that case, the premium will be 968, right? Approximation says, yeah, here. Do remember, approximation says it will be 968. Okay, right? Now, so with this, you will be able to find out the approximate price when the target, right, is being hit. Okay, now same way what you can do is, right, because you initially bought at 50,000. Okay, that when the underlying price was 50,686. Okay, now suppose you are keeping a stop loss at let's say 100 rupees below the current price, 100 rupees below the current price. So what you can do is go here, 49,900, right? Because 686 is the premium at which you bought. Now the question comes up, at which premium I should put my stop loss. So what is your stop loss price? It is based on underlying price. Okay, so 49,900. So from 686, if I buy, okay, I should put my stop loss. If the price goes up goes down by 100 rupees, in that case, the premium may be very, very close to 636.68. That is 636 rupees will be the premium. So you're buying something at 686. Just a moment, please. Just a moment.
Okay, so sorry. Okay, so this is not 100% accurate. Okay, but yes, the probability says that your premium, when the price goes down to 49,900, at that time your premium will be very close to 636. So what people execute is basically they buy, right? Because this is not a 100% thing, right? Because there are 4 things which impacts your premiums, and we are just discussing one. So they calculate, put 10, 15 rupees plus minus, right? Put their stop loss, put their target. So बहुत सिंपल है. जिस समय आप 50,000 पे बाय कर रहे हैं 686 प्रीमियम में, इस कैलकुलेटर को लीजिए, फाइंड आउट करिए कि अगर आपका टारगेट हिट होता है तो व्हाट विल बी द प्रीमियम, राइट? सो you'll get a fair amount of idea. Do remember, it is not exact, it is approximate. So 10 15 rupees plus minus is acceptable. Okay, same way आपको stop loss डालना है, you can use this. Okay, why I'm telling you, because most of the time people put their positions, right, but forget to put a stop loss, because they are not, particularly retail investors are not able to understand the importance of stop loss. And particularly in case of options, and when you're buying options, right, it is extremely important. So the objective of this is to let you understand that how to determine the premium amount. What will be the premium amount, I mean to say, when the price decreases, and what will be the premium amount when your targets are being hit. Okay, right? Now this was about same day criteria. Okay, I'll come back to the same point from where I started. 686 premium, 30 days in. Okay, now I'll take the another case. Okay, I'll take the another case. Suppose you are holding position for 3 days. You're buying an options contract and you are holding a position for 3 days. Okay, in that case, what is going to happen? Okay, very, very important. Okay, so suppose you're on first day of the month, the expiry is 30th, is 30 days away from today's date. Spot price is 50, strike price is 50,000. Okay, number of days remaining today are 30, and volatility is 12%. Volatility is 12%. Okay, in that case the premiums is 686. So I'll go back, right? This is my third part. Okay, right? So underlying price, no, I'll just write same as first case. Okay, everything remains same. My premium is 686. Okay, now suppose IFL research has suggested me that 686 is the current premium, 50,000 call, and we are bullish. Now the question comes up, how much you're bullish? So the target being set by them is 5,500. 5,500. So what I will be doing is, okay, I am buying at 50, I'm buying a call option at 686. I'm buying a call option at 686, right? But the question comes up, what will be the premium when my targets are being hit? Okay, so same thing, 5,500. But I also asked that in how many days this 5,500 is going to be achieved. Okay, because when 5,500 happens, at that point, sorry, 5,500. Okay, so the research report says that in next 3 days, right, we are expecting the target to be hit. So what? So today I'm buying at 686 premium when the underlying price is 50,000. Okay, and I'm expecting in 3 days time the target will be hit. Okay, the minute it achieves its target, I should square off. So now we are again going to calculate that what will be the premium after 3 days when the targets are being achieved. Okay, so we bought at 686. Okay, back to here, 686. Oh, sorry. All right. Okay, but because they say that in 3 days it is going to be achieved, right? But first, number one, if it is being achieved today itself, do you know what will be the premium? The premium, which was 668, 686,
becomes 968 if it is being achieved today itself, right? So I'll write, if the target is being achieved today, the premium will be 968. Okay, right? And if it is being achieved tomorrow, Tom, right? So if tomorrow I'm going to calculate this, I will calculate it with 29 days. 29 days. Okay, okay, because if today passes over, I will only have 29 days remaining for expiration. In that case, the premium will be 957. Okay, Tom, 957, right? And day after Tom, let's say if I keep it at 28 days, this is 945. Okay, and on after that, next day, after day after tomorrow, that is date. Okay, I'll keep it at 27. The target will be 934, right? 934. What it says that if I'm going to hold my position for more number of days, jitna zyada main hold karunga, right? Okay, even if the target is being achieved, okay, my profit margins keeps declining, because we all understand if we hold an options buy position for a longer period of time, due to time decay property of option, right, my targets are being adjusted. So from 968 to 938. Now, this is an example when I'm talking about 30 days to 20 days. Okay, I'll write it down, 30 days to 27 days. Okay, now let me tell you the magic. Okay, the magic, I mean to say the knowledge side of markets. Okay, right? So my target keeps declining. Even if my target is being achieved in this underlying product from 50,000 to 50,500. Okay, if it is achieved today, right, I may square off at 968. If it is achieved after 3 days, right, okay, it is not going to touch 968, it is going to be at 934, keeping all things constant, right? Okay, now same as first case, right? Okay, premium, same as first case, but 10 days remaining for expiry. Okay, so हम लोग क्या करते हैं, right? 50,000, only 10 days remaining for expiry, and 12% is the volatility. Okay, right? Now it says if there are 10 days remaining for expiry, 50,000 is the underlying price, 50,000 is the strike price currently. You can buy a call option at a volatility of 12% at 396 rupees. Okay, right? So buy at 396 rupees, right? The premium is 396. It was previously 686 rupees, right? So suppose 10 day, today is the date, today is the day, okay, and the expiry day is 10 days down the line. Okay, in that case, let's say the research team says that gold, right, which is currently at 50,000, may achieve 50,500 in next 3 days. Okay, right? And based on it, I bought a call option of 50,000, right, at a premium of 396. Buy at 396. I bought which strike price? Same as per first case, but only there are only 10 days remaining. Okay, now if target is being achieved today itself, okay, if the target is being achieved today, then premium will be okay. So 50,396 I bought. If it is achieved today, okay, the premium will be 696 rupees. I'm super happy with this, right? 696 rupees. So the difference between 396 and 696, 300 rupees is my profit. But
if it is achieved tomorrow, right? So from tomorrow onwards, if I start calculating, that means now I'll have only 9 days remaining for expiration. It says 679. 679. Okay. Day after tomorrow, let me create 8 days now. It says 660. Okay. And if 7 days remaining for expiration, it says 641. Right. Next day after Tom. That stands for day after Tom. It says 641. So 641. Okay, right? If you see, if you're holding a position for a longer period of time, right? Particularly a buying side of market, a buy side, even if your targets are being achieved, right? If your targets are being achieved after 3 days, something which you bought at 396 will automatically become 641, even if your targets are being achieved. Even if your targets are being achieved. Okay, that's the point which I'm trying to highlight. That means, just to summarize it, okay, do remember, if you see the kind of change which has happened, okay, the kind of change which has happened is that if you are buying a call option at start of the month from 957 to 934, from 957 to 934 is the kind of change which happens even when your targets are being achieved. Okay, and same way, right? If you're buying a position at during last 10 days, right? Okay, it is 696 to 641. 696 to 641. Okay, if you go and calculate the kind of change, let me open it. From 968 to 934, it says 34 rupees change. You will have less profits of an amount of 34 rupees. But if you are doing the same thing, even if your targets are being achieved during last 10 days, so from 696 to 641 will be the change. So we are actually losing more, right? That means I am so sorry, not losing, but the kind of profits which you are making will be less. Okay, that says one thing very, very clearly, right? That when you're buying an options contract, okay, when you're buying an options contract, make sure you don't hold your position for a longer period of time. Okay, if you're doing it, it is still okay if you're doing it at start of the month. But when you're close to the expiry, okay, every day start putting a big impact on your position, even if your targets are being achieved. Okay, and that's why if you understand the options on the right side of it, it says buying options, right, is always a good criteria at start of the month, right? But when you're close to the expiry, either you should be very much confident that your targets are being achieved, and very soon they are going to achieve. Very, very soon you are going to achieve the targets. Else your positions will not be that much profitable. Will not be. And this is with reference to at the money call option. This is with reference to at the money call option. Think about it. If I start talking about out of money options contract, I am not going to put that now in the notepad, but will directly show it to you from this website. Suppose, please have a look at it. The market price is 50,000. Okay, and I'm talking about 53,000 call option. Okay, suppose 30 days remaining. Okay, let me go and calculate. Let's say 13% is the vol which is prevailing, volatility is prevailing. It says if the spot price is 50,000, I'm talking about call option, right? Please be very, very careful on this. Let me use 52. It becomes more premium oriented question. Okay, so 50,000 is the spot price जो अभी है. Exercise price is 52,000. Exercise price is 52,000. 30 days remain and volatility is 13%. It says
143 rupees. 143 rupees will be the premium. So suppose you bought something in premium, okay, in expectation that the spot price will go up, right? We bought some, suppose we bought it at 143, okay. When it goes to when it is achieved, when it achieves, right, 50,500, which was your target, it says 143 will become 235. But suppose if it takes 3 days time, okay, 143 will become only 207, right? Okay, 143, right? So approximately a profit of 64 rupees. But in the same case, if this happens, it says you bought something at 14 rupees, even if the targets are being achieved, even if the targets are achieved, you bought at 14 rupees, okay. When 10 days were remaining for expiration, calculate, it says still you only make 6 rupees. Then you have to pay the brokerage, that exchange TO fees, which is not there. Exchange TO fees is not there at NSE for gold mini options, but yes, all other. So technically, it becomes very difficult for you to manage this position. So in out of money options contract, it becomes very, very serious impact that even if the gold has moved up by 500 rupees, right, you only make 7 rupees, right? Okay. So I'm again repeating the final concept for you, that it is okay if you buy a call option at start of the month, right? Okay. Try avoiding it when you are close to the expiration. Okay, right? Do remember, we should always understand the right side of markets. Okay, theta value impacts you more, the time value impacts you more when you're close to the expiration. And I completely understand it is quite difficult to grasp everything which I'm sharing it with you. My request is go to option-price.com or any of the option calculators platform, okay, and start exploring how this is being, manage, how this basically impacts your premiums, right? However, we have only discussed two parameters. We have only discussed two parameters. Number one is change in underlying price, number one, and number two, change in number of days to expiration. The third and one of the most crucial things, which now I'm going to share with you, 30 days, is the volatility concept. Technically, premiums are being determined with 4 criteria: underlying price, strike price, number of days for expiration, and volatility. 4 things basically determines, right? Basically, you can even go to interest rates and yields and all that stuff, but 4 important perspectives, because interest rate is not like something which keeps changing every day. Okay, so right now this is now going to be a magic number for all of you, right, which is called as volatility. Which volatility we are talking about? We are talking about implied volatility of options. Okay, so currently it is at 11%, 12% kind of, right? Okay, so what we are doing at this point in time, we are taking up underlying price 50,000, exercise price 50,000, 30 days for expiration, and 12% is the volatility. 12% is the volatility. It says if these are the parameters currently in the market, the call option premium is 686 rupees. The call option premium is 686 rupees. Please note this, call option premium is 686 rupees. Now suppose today itself, this everything is same, right? Say after 3-4 hours, the underlying price is still 50,000, strike price 50,000, no change in days until expiration. Everything is same, but volatility changes. So what we'll do is we'll make an example out here, because this is going to be very, very crucial. Okay. So underlying price, underlying price 50,000, strike price 50,000. Okay.
number of days remaining, 30 days, and volatility is at 12%. Okay, my premium is 686. Okay, and suppose I have not checked any chart, right, which says that the price is going to be bullish or price is going to be bearish. I have not used any tips, any recommendation, nothing. But my view, okay, my view is that volatility will change. Now, when I say volatility will change, it's like that 12 wala number, which says out here, 12, okay, will change. Okay, that is my view. So I'm not taking a view of direction. I'm not talking about the number of days remaining for expiry, but I'm taking a view of volatility. Now, which volatility? Implied volatility of gold. Implied volatility of gold. Okay, right? And on that basis, I bought. Okay, I bought. Okay, so I bought at 686, and I was fortunate. The implied volatility on the same day changed 13%. It was 12%. It was 12%. Market is still at the same price level. Market is still at the same price level. Volatility becomes 13. When the volatility becomes 13, right, the markets are still at the same price levels, but the premium changes to 743, right? Vol increased to 13%, and premium become 743. 743. Okay, it says that everything is constant, right? Even spot has not moved up by one rupee, but still the premium got changed. Okay, just 1 second, please. Yeah, okay. So premium got changed. Why premium got changed? Because the volatility increased. Volatility increased. In that case, volatility increased. In that case, the premium also has gone up. That means quite possible that if volatility starts decreasing, if the volatility starts decreasing from 12% to 11%, nothing has changed. The underlying price is still at the same price level, but it goes to 629. From 686 to 629, even nothing has changed in the underlying price. Spot price हिला भी नहीं है. उसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ. Still 629 premium हो गया. क्यों? क्योंकि volatility change. That means what we have found basically out here is, if volatility increases, then premiums will increase. Okay, and if vol decreases, then premiums will decrease. Okay, and let me tell you, it is for both, right? Because time is limited. Okay, it is for both. When I say both, means for call as well as put. Okay, that means if volatility of gold mini options starts increasing, which volatility? Options volatility, which is called as implied volatility. In that case, the premiums will automatically increase even if there is no change in underlying price, right? And if volatility starts decreasing, then premium will start decreasing, right? Decrease in vol, decrease in premium. That means the premium will decline. Even no change in underlying price. Underlying price has not gone down or number of days has not passed over, still the premium changes. And think about it, the kind of premium which is changing from 686 rupees to 743 by just change
of volatility by 1%. So 743 minus 686, it comes to 57 rupees. Of 57 rupees change on a base of 686 is like 8.3%. So 8.3% profit in your in this example says that even if nothing changes, 8% profit, 8.3% profit and loss is dependent on the change of 1% of volatility. राइट, मैं हिंदी में भी बोलता हूं 1% वॉलेटिलिटी भी अगर चेंज हुआ तो सोचिए 8%, 8% इज नॉट समथिंग विच इज, सॉरी, 8% प्रॉफिट्स या 8% लॉसेस मेरे को ऐसे ही हो जाएंगे अगर वॉलेटिलिटी वो भी सिर्फ 1% से चेंज. थिंक अबाउट इट, that market has not changed, but still the premium changes. Why? Because of volatility. This basically gives you a hint, right, that not just looking at charts will help you to find out the right side of options market, but it is quite important to start tracking the volatility of options. Let me tell you, if you are trading bank nifty options, volatile products per se, let me tell you the impact of change in options volatility is so huge that you can't even think of, right? Go and check for bank nifty as well. I'm so sorry, nifty as well, all other liquid products. Go and check it. You'll be surprised that your sometimes it is like 10%, 12%, 14% dependency is just on volatility. So premium में 10% का चेंज हो जाता है सिर्फ volatility के चेंज होने, इतना crucial है. And unfortunately these days when I go and talk to people, they don't look into what is the volatility. They check the charts saying ये तो ऊपर है, buy कर लीजिए. अब बहुत बार ऐसा होता है, right, that people buy options. Let's say someone buys a call option, spot price ऊपर भी चला जाता है, right? Okay, but still they are not able to make good money out of options. ऐसा इसलिए क्योंकि उनको options के बारे में सिर्फ ये बताया गया है कि options जो है वो underlying price के हिसाब से चलते हैं. But practically speaking, underlying price, number of days to expiration, and which is extremely important, volatility. These three things which are extremely important to determine the option premiums, right? और मैं आपको बहुत ही क्लियरली एक और चीज बोलता हूं कि अगर आपको ये तीन चीज, स्पॉट प्राइस चेंज होगा तो प्रीमियम चेंज होगा, नंबर ऑफ डेज जैसे जैसे पास ओवर होंगे तो चेंज होगा, और वॉलेटिलिटी, ये तीन चीज मैं आपको बताता हूँ. इन तीन में से अगर आपको सिर्फ दो ही पता थी अभी तक और थर्ड पता थी बट यू हैव नेवर गॉन इनटू अ डिटेल एनालिसिस ऑफ वॉलेटिलिटी, देन प्रोबेबली आपको ऑप्शन मार्केट में जो प्रीमियम चल रही है उसमें तीन चीजों में से सिर्फ दो चीजें पता है. दैट मींस यू ओनली अंडरस्टैंड 66% ऑफ द मार्केट. और मुझे नहीं लगता है 66% मार्केट जानकर आप बहुत अच्छा ऑप्शन ट्रेड कर पाए. सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाके ऑप्शन के जो तीन फंडामेंटल पिलर्स हैं प्राइसिंग के, स्पॉट प्राइस, नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरेशन और थर्ड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये तीनों चीज एक्सप्लोर करें. स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑल थ्री थिंग्स, देन ओनली you will become proficient in the markets. So आपको ये जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी क्या होती है, ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी जिसको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं. जाके देखिए ये कब चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, इवेंट कोई आता है तो कैसे बिहेव करती है, इवेंट के पहले कैसे बिहेव करती है, पोस्ट इवेंट हाउ इट बिहेव्स, एट द टाइम ऑफ इवेंट हाउ इट बेसिकली बिहेव्स. फिर जाके देखिएगा, go and then check that in a normal market wherein there are no events, how the implied volatility of option behaves. ये तीन चीज कर लेंगे, I'm sure you will automatically be at the next level for options trading. And let me tell you, particularly in the game of gold mini options at NSE, if I have to rank, I will give the highest rank, right, to volatility percentage. A change in volatility will change the entire game of gold mini options. So इस तरीके से लोग ध्यान रख के, तीनों चीज को ध्यान रख के लोग ट्रेड कर रहे हैं. अगर अभी भी आप सिर्फ दो ही चीज देख रहे हैं, कितने दिन बाकी हैं और क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, then you will have problems in options trading.
एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, पीपल यूजुअली आस्क मी क्वेश्चन कि गोल्ड की वॉलेटिलिटी कहाँ से देखें हम, राइट, और ये कैसे ढूंढे कि ये वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, राइट। ओके, सो मैं आपको एक टूल बताता हूँ, आई एम सो सॉरी, एक इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ। अगर आप कोई भी पोर्टल पे जाएं, जैसे investing.com है, tradingview.com है, इधर जाके सर्च करें GVZ, ओके ओके, GVZ इज बेसिकली गोल्ड वॉलेटिलिटी इंडेक्स, गोल्ड के वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है, और ये आपको बहुत क्लियरली बताता है कि अभी गोल्ड की वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है, उसका चार्ट आ जाता है। यू कैन अप्लाई योर टेक्निकल एनालिसिस ऑन दैट चार्ट टू एक्सपेक्ट कि क्या होने वाला है, राइट, गोल्ड की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, and this has to be combined with IIFL research call, and I'm sure you most of the time you will be on the right track for trading in gold mini options contract at NSE. Okay, so that was a quick brief about how people are actually using gold mini options by combining spot price, time value, and volatility. To take a reference for volatility, they use GVZ, गोल्ड वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ओके, सो जैसे आप इंडिया विक्स देखते हैं, वैसे ही गोल्ड वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी यूएस मार्केट्स में है, और आप उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से दिस इज हाउ थिंग्स एक्चुअली मूव्स। ओके, इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रश्न है, आप अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एल्स अगर आपको मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करना है, डू रिमेंबर आई रिप्रेजेंट द एक्सचेंज. I don't give calls, I don't give suggestions. My objective is to make you understand the right side on the education for options market. अगर ऐसा है तो मनी के पास मेरा डिटेल्स है, you can connect. And please don't call me for क्या लग रहा है गोल्ड, क्या लग रहा है मार्केट. They are not into it. Money, back to you. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आज कुछ नया सीखने को मिला है। बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं सर वॉलेटिलिटी, सर नॉर्मली वॉलेटिलिटी कौन से रेंज में रहता है? अभी मैं गोल्ड के बारे में बताता हूँ। मार्च वाला महीना मैं छोड़ दूं, क्योंकि मार्च में वो रशिया यूक्रेन वॉर इशू हुआ था, देन द वॉलेटिलिटी फॉर गोल्ड वेंट अप क्वाइट हाई, बट फ्रॉम लास्ट समझिए आप 2 years में, ओके, पर्टिकुलरली मैं 2020 मार्च भी छोड़ देता हूँ, बट वो भी एकदम एक्सेप्शनल मंथ था। ओके, सो दोनों मार्च में छोड़ देता हूँ, 2022 का भी और 2020 का भी। एल्स गोल्ड की वॉलेटिलिटी 9% से 13.5% के बीच में रहती है, राइट। इट की कंटिन्यूअसली मूव्स ऑन, बट गोल्ड की वॉलेटिलिटी 9% से 13% के बीच में रहती है। ये जो ऑब्जर्वेशन है, इट इज बेस्ड ऑन जो मैंने देखा है। सो 30 डेज, लेट्स से एक्सपायरी 30 दिन बाद है, राइट, सो 30 डेज रिमेनिंग फॉर एक्सपायरेशन से 10 डेज रिमेनिंग फॉर एक्सपायरेशन के बीच में आपको वॉलेटिलिटी 13.5% से 9% के बीच में मिलेगी। लास्ट के कुछ दिनों में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है वो बढ़ती है, उसका रेंज कुछ 12% से 16% के आसपास। सो बिकॉज देखिए टाइम और वॉलेटिलिटी, राइट, गोज हैंड इन हैंड। सो अगर मैं 30 दिन की बात करूं, 30 दिन एक्सपायरी के, मैं सिंपल एग्जांपल लूं कि 30 तारीख को एक्सपायरी है, तो 1 तारीख से 20 तारीख के दिन मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड की वॉलेटिलिटी जो है वो 13.5% से 9% के बीच में रहेगी, 9 से 13.5%, और यही चीज जो है वो 16% तक चली जाती है इन लास्ट 10 days, इन लास्ट 10 days. Yes sir, yeah, thanks a lot sir. Let me take PPT on internal side. सर मैं शेयर कर लूं अपना PPT. Yeah, thank you sir. Let me share the PPT. गुड इवनिंग टीम, हाय, दिस इज मनी फ्रॉम कमोरेंट करेंसी डेस्क। जैसे कि हितेश जी ने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया है, लेट मी टेक ओवर फ्रॉम हियर। व्हाट आर द सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम हेड ऑफिस? हेड ऑफिस से क्या क्या सपोर्ट मिलता है क्लाइंट को, यहाँ तक कि फ्रेंचाइजी को? लेट मी ब्रीफ वन बाय वन। पहली बात है कि कमोडिटी करेंसी मंत्रा होता है कि बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट को कॉल्स चाहिए, क्लाइंट को डिटेल चाहिए, व्हाट आर द डेटास वेयर देयर ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। तो कमोडिटी करेंसी मंत्रा जो नॉर्मली बिफोर 8:30 रिसर्च टीम दे प्रिपेयर द रिपोर्ट्स एंड सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में चला जाता है। इवन दो वी हैव वन व्हाट्सएप नंबर फॉर टेक्निकल लेवल्स,
द नंबर इज 8451080999। ये इसमें ये पर्टिकुलर व्हाट्सएप में रिसर्च के कॉल्स यहाँ तक कि डेली लेवल्स दिया जाता है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आवर्स, ताकि क्लाइंट को गाइडेंस मिले रिगार्डिंग मार्केट आउटलुक। द सेकेंड पॉइंट इज रिसर्च कॉल। वी आर गेटिंग गुड नंबर ऑफ रिसर्च कॉल। जैसे कि आपको पता है कि वोलेटिलिटी गोल्ड सिल्वर इतना इंक्रीज हो गया है, research can able to provide a good number of research call with a good strike rate around 70%. The third point is technical levels। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि व्हाट्सएप में वी आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। होता है कि बहुत सारे क्लाइंट को जैसे मार्केट ओपन होता है उनको ट्रेडिंग का कॉल चाहिए, तो इट्स नॉट फॉर अस टू डिफिकल्ट कि मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही कुछ कॉल्स प्रोवाइड किया जाता है। हम गाइडेंस देते हैं क्लाइंटों को, ये दिस इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लेके आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ तक कि बहुत बार क्या होता है कॉल से तो ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बहुत क्लाइंटों को यूजफुल होता है। द फोर्थ पॉइंट इज टोल फ्री नंबर। वी आर सेंट्रलाइज डीलिंग डेस्क कोरियर फ्रॉम हेड ऑफिस, जहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया अलग, दो कॉल नंबर, एक तो साउथ और ईस्ट के लिए एक ही लाइन है, एंड सेकेंड इज नॉर्थ और वेस्ट के लिए अनदर नंबर इज प्रोवाइडेड। I will tell you the number later part. Yeah, let me move to another part. ये मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कोमोडिटी मंत्रा। बिफोर द मार्केट गेट्स ओपन रिसर्च टीम प्रोवाइड करती है रिपोर्ट्स। ये एक सिंपल एग्जांपल है जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया जाता है क्लाइंटों को समझने के लिए कि गोल्ड क्या लग रहा है, व्हाट आर द न्यूज़ वर देयर लास्ट इवनिंग। होता है क्या कमोडिटी मार्केट इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट ऑन डेटा। जैसे यूएस मार्केट शाम को कॉमेक्स ओपन होता है 6:45 को, तुरंत मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाता है क्योंकि शाम को बहुत सारे डेटा देते हैं। जैसे कि आज 6 बजे कंटिन्यूस जॉबलेंस क्लेम डेटा है जो भी इम्पैक्टिंग ऑन बुलियन। बुलियन मींस गोल्ड एंड सिल्वर को इम्पैक्ट करेगा। नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी विच मींस पॉजिटिव फॉर बुलियन। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे क्लाइंट ट्रेड करते हैं विदाउट एनी कॉल्स। लेट मी मूव अहेड। ये करेंसी के रिपोर्ट्स है मॉर्निंग में बिफोर द मार्केट गेट्स ओपन विल सेंड टू रजिस्टर मेल आईडी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द इंटरनल पार्ट, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग। टीटी वेब एक वेब पेज है क्लाइंटों के लिए जो लैपटॉप में लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है। एंड मोबाइल एप्लीकेशन, मोर देन 80% जो क्लाइंट मोबाइल एप्लीकेशन की टू ट्रेड कर रहे हैं इज ए यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन व्हिच इज गेटिंग अपडेटेड ऑन अ डेली बेसिस। कुछ नया फीचर्स ऐड होते रहते हैं रेगुलरली 15 to 20 डेज के बीच में। क्लाइंटों को मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू अपडेट योर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। जब भी अपडेट पूछता है ट्राई टू अपडेट इट। होता है क्या बहुत बार क्लाइंटों को एरर आता है, जैसे कि जब भी क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करने जाता है सिस्टम पूछता है कि रिक्वायर्ड फंड, तो ट्राई टू अपडेट चेक, आप चेक कर लीजिए कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन पर अपडेटेड है नहीं है करके। दिस इज अ टीटी वेब। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि गोल्ड मिनी ऑप्शंस या फिर गोल्ड आप टीटी वेब में कैसा इंसर्ट करते करके कैसा दिखता है करके। कोई नया क्लाइंट है उसको बोलिए कि डैशबोर्ड में जाके क्लिक करके आप ईच एंड एवरी फीचर्स दे कैन एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब जैसे कि लेजर रिपोर्ट क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट द पे इन पे आउट कैसे कर सकते हैं। लेट मी मूव अहेड। हाउ टू इंसर्ट गोल्ड मिनी इन टीटी वेब। मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है गोल्ड मिनी ऑप्शंस टीटी वेब में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड मिनी एनएससी का जो करंट रेट रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट है 3 जून का है। Client has to go and type gold mini. You have to select commodity option. You have to select the exchange NSE. NSE में call जो भी 45,000 52,000 का call option select करके add करना है। Once they added in market watch, they can able to view the screen over here कैसे insert होने का कैसा दिखता है करके। Then they can able to trade further. I don't want to take this point. This is normal buy order and sell order जो सभी क्लाइंटों को पता है। टीटी वेब में रिसर्च में आईएफएल कॉल्स में डेली बेसिस में रेगुलरली अपडेट दिया जाता है रिगार्डिंग डेटास एंड कॉल्स। मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मोर देन 80% दे ट्रेड इन मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे वी हैव मच मोर गुड रेटिंग अराउंड 4.5%, वन ऑफ द बेस्ट ऐप इन इंडस्ट्री। इज ए यूजर फ्रेंडली ऐप। मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट वॉच कैसे दिखता है मैंने ये व्यू शेयर किया हुआ है क्लाइंटों के लिए। This is the dashboard. Market watch 1 to 3 options. This is a basic commodity जो वाइली commodity कैसा दिखता है मोबाइल एप्लीकेशन में।
बहुत सारे क्लाइंट्स कॉल करते हैं, सर एनएससी का गोल्ड मिनी का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इट्स वन ऑफ द इजिएस्ट वे आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। क्लाइंटों को क्या करना, गोल्ड मिनी क्लाइंट हैज टू, जैसे कि गोल्ड मिनी जो रीजन कॉन्ट्रैक्ट है 3 जून, आपको 3 जून डालना है। जैसे ही आप 3 जून डालोगे ना, तो आप यू बी गेटिंग द कॉल एज वेल एज पुट ऑप्शन ओवर हियर। जैसे दिखता है, क्लाइंटों को सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है मार्केट वॉच में। once you added in the market watch, you can able to view like this। मोबाइल एप्लीकेशन में वी हैव वन ऑप्शन, ऑप्शन चेंज। ऑप्शन चेंज मीन्स कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितने वॉल्यूम हुआ है, क्लाइंट मोबाइल एप्लीकेशन में चेक कर सकता है। बहुत सारे क्लाइंट्स माइट भी वेबिनार में रहेंगे जो ऑलरेडी इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, दे वांट टू ट्रेड इन कमोडिटी आल्सो। तो वी हैव अपडेटेड आवर सिस्टम जहां पे क्लाइंटों को डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। टीटी वेब में क्लाइंट को जाना है, डेरिवेटिव्स एक्टिवेशन में जाके क्लिक करना है, वहां पे एनएससी एमसीएक्स में टिक करके सबमिट करना है। जैसे टिक करके सबमिट करके विद इन 48 आवर्स अकाउंट विल बी गेटिंग एक्टिवेटेड। वैसे ही फंक्शन हमने मोबाइल एप्लीकेशन में भी डेवलप किया हुआ है, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ लॉग इन लैपटॉप, क्लाइंट मोबाइल एप्लीकेशन के तो भी कर सकता है। जैसे कि राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्लाइंट आईडी दिख रहा है, MANI money 0083, that's my ID। Your client has to click over there। Once you click and over there, no, you'll be getting one option, view and edit detail। वहाँ पे माई प्रोफाइल डिटेल में सेगमेंट एक्टिवेशन पे क्लाइंट को जाना है। वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि कमोडिटीज एमसीएक्स एनसीडी एनएससी, यहाँ पे टिक करके सबमिट करना है। वंस यू टिक एंड सबमिट, your account will be getting activated within 48 hours। That's a working 48 hours। Once you get activated, will be send mail to you। तो आप लॉग इन करके आप ट्रेड कर पाओगे। That's my brief from my side due to short of time। If any query, please ask dear team। कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। इतने सर मोस्टली क्लाइंटों का वही रहता है कि मतलब वोलेटिलिटी कैसे चेंज होता है एंड व्हाट आर द डेटास इंपैक्टिंग, वैसे बेसिक डेटा क्या क्या इंपैक्ट होता है। और कोई कोई क्लाइंट ये भी सवाल पूछता है कि सर व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू ट्रेड, जैसे कि 11 बजे 11:30 बजे एक मूवमेंट आता है, वैसे आपके हिसाब से कुछ ऐसा बेसिक कुछ टाइम है कि जहाँ पे वोलेटिलिटी या मूवमेंट पकड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एक तो खुलते से सबसे अच्छा वोलेटिलिटी मिलता है आपको। दूसरे में जब कॉमेक्स जो एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज जहाँ पे गोल्ड की सबसे बड़ी ट्रेडिंग होती है वर्ल्ड में, राइट, विच ओपन्स एट 5:50, ओके, तब होता है 8 o'clock के आसपास जब यूएस इक्विटीज जो है जब मूवमेंट में आते हैं तब होता है। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट टाइम पॉइंट्स वेर इन वॉलेटिलिटी काफी अच्छा मिलता है आपको कंपैरेटिवली दिन भर से। यहाँ तक कि कब वॉलेटिलिटी रहती है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कल वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज यूएस फेड का मीटिंग है, कुछ आउटकम आएगा, और चूंकि वो रात को 11:30 बजे के बाद में होता है इंडिया टाइम के हिसाब से, तो हमको कल इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है। सो यूएस के नॉन फार्म पेरोल्स हैं और भी जितना डेटा आता है, ओके, इकोनॉमिक रिलीजेस जिसको बोलते हैं हम, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जीडीपी डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, यूएस इंटरेस्ट रेट का जो मॉनेटरी पॉलिसी मीट होता है, ये इन समय पे आपको हमेशा गोल्ड में तो वॉलेटिलिटी दिखेगी। तीसरा पॉइंट जो है कि भाई वॉलेटिलिटी को कैसे एनालाइज करें, कब ये बढ़ेगी कब ये कम होगी, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। मैं मनी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मनी नेक्स्ट 10-15 दिन के अंदर अंदर, मतलब फर्स्ट एंड द सेकेंड वीक ऑफ जून में, लेट अस प्लान वन मोर सेशन, पर्टिकुलरली हाउ टू यूज implied volatility। Yes, sir। सिर्फ वॉलेटिलिटी का सेशन हम लोग, ये कितना चेंज होगा प्रीमियम, इन सब पे बात नहीं करेंगे, कि वॉलेटिलिटी जो है गोल्ड की उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, कब बढ़ेगी कब कम होगी। विल मेक 10 एग्जांपल्स, राइट, कि देखिए इस दिन ये था भाव, राइट, ये चल रही थी प्रीमियम, ये वॉलेटिलिटी थी, ऐसा हुआ, उसका देखिए वॉलेटिलिटी बढ़ गई, इसके बाद वापस से जब ऐसा हुआ था तो वापस से वॉलेटिलिटी बढ़ गई, फिर जब हुआ, सो विल पुट 10 एग्जांपल्स, राइट, ओके। तो एक ब्रॉड व्यू आ जाएगा कि भाई ऑप्शंस की जो वॉलेटिलिटी है वो कब बढ़ती है कब कम होती है, इवेंट के हिसाब से कैसे चलती है और बिना इवेंट में कैसे चलती है। बट चूंकि वो बहुत ब्रॉड डिस्कशन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनी
जी सर, बिल्कुल। हम लोग नेक्स्ट कुछ जब भी ऐसा वेबिनार प्लान करते हैं we'll do it like। एक और चीज एब्सोल्युटली मनी, राइट। मैं सभी जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं मैं बोलूंगा, देखिए मैं काफी टाइम से आईएफएल से जुड़ा हुआ हूँ, और एक चीज मैंने देखी है, एक महीने में 2 बार ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है। एक पर्टिकुलरली वो जो आपका एडवाइस आती है जिसमें यूएसडी आईएनआर के सामने गोल्ड मिनी ऑप्शंस एनएससी वाले करे जा सकते हैं। आई हैव अ रिकॉर्ड एज वेल, मैं उसका बहुत बहुत अच्छा सक्सेस रेशो है, राइट। सी रिस्क तो है बिल्कुल, क्योंकि व्हेन यू आर इन मार्केट्स रिस्क है, राइट, बट व्हेन आई टॉक अबाउट सक्सेस रेशो, बिकॉज वो मैं भी चूंकि आईएफएल के ग्रुप्स में कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ, तो वो मेरे को भी आता है। तो जो वो यूएसडी आईएनआर और गोल्ड मिनी ऑप्शंस का जो स्प्रेड कॉल आता है, दैट इज सुपर अमेजिंग। आई थिंक जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, एक बार मनी से आप बात करिएगा, आई एम श्योर आप उसको करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मतलब वेरी स्टेटिस्टिकली ड्रिवन, वेरी क्वांट बेस्ड ड्रिवन आई विल से, और बहुत ही अच्छा आउटकम है। जी सर, या सेकंड थिंग इज दैट देयर वाज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द लिक्विडिटी। जैसे कि दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट गोल्ड मिनी ऑप्शंस, एज वी नो द ऑप्शंस में अभी क्लाइंट समझने लगे हैं ट्रेड। तो यहाँ तक कि एक्सचेंज में भी अगर देखेंगे लगभग 1200 लॉट का तो ओपन इंटरेस्ट करंट मंथ में ही है। और ये हो रहा है, जो जो क्लाइंट ट्रेड कर रहे हैं हमारे एंड से भी दे आर ट्रेडिंग स्मूथली। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल इलिक्विड है ट्रेड हो रहा है। या इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट वंस द क्लाइंट गेट एबल टू नो। या सर आप बताइए बेटर। हाँ, बिकॉज एक्सचेंज पर्सपेक्टिव है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप सबको बहुत क्लैरिटी से बताता हूँ। देखिए एक ये नया कॉन्सेप्ट है, ऑप्शंस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट गोल्ड मिनी के ऊपर जो ऑप्शंस है ये नया कॉन्सेप्ट है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम सेबी के पास में गए, हमने उनको रिक्वेस्ट किया, चूंकि ये नया कंसेप्ट है तो किसी को भी, किसी भी क्लाइंट को एंट्री और एग्जिट का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप LES स्कीम लॉन्च कर सकते हैं, विच इज लिक्विडिटी इनहेंसमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है, मार्केट मेकर एक अपॉइंट किया जाता है, और वो मार्केट मेकर आपको 2 वे कोट्स हमेशा देगा। 2 वे कोट्स हमेशा देगा, मतलब बिड भी वो लगा के रखेगा और आस्क भी वो लगा के रखेगा। और ऐसे 2 लोग, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक मार्केट मेकर नहीं, 2 लोग आपको कंटिन्यूस भाव देते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, एक अप्रोच कैसी होती है, अरे भाई वॉल्यूम कितना हुआ है तो मैं देखूं। बट एक प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में ये है, भाई वॉल्यूम बहुत है, ठीक है, आप समझिए एक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई XYZ प्रोडक्ट, उनमें वॉल्यूम बहुत है, राइट, बट बिड आस्क डिफरेंस 50 रुपए का है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क गुड फॉर यू। बट वही चीज शायद एक जगह बहुत ठीक ठाक वॉल्यूम है, मगर आप कभी भी मार्केट में एंट्री और एग्जिट चाहो तो 2 मार्केट मेकर आपको खड़े हैं जो आपको हमेशा एंट्री और एग्जिट दें। नाउ यू डिसाइड व्हाट इज राइट। सिर्फ एक डेटा वॉल्यूम, आपको पता है वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है कि अभी तक क्या हो चुका है। हम पास्ट में नहीं जीते हैं, हम ट्रेड प्रेजेंट में लेते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं। दैट मीन्स मैं मना नहीं करता वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल है, और देखना भी चाहिए। बट अल्टीमेटली द कॉन्वर्सेशन बॉइल्स डाउन टू क्या मैं अभी, वॉल्यूम कुछ भी हो, मैं इस समय एंट्री करूं या एग्जिट करूं, इज देयर एनीवन हु इज गोइंग टू गिव मी अ कोट एट अ गुड प्राइस, एट अ रिलायबल प्राइस, जो मेरे को एंट्री दे, एंड ऑल्सो व्हेन आई एम गोइंग टू मेक एन एग्जिट, क्या वो एग्जिट अवेलेबल है। मैं आपको सब ऑन द ओपन फोरम आई एम टेलिंग यू, फुल ऑफ लिक्विडिटी, आप जितना काम करना चाहते हैं आप करिए। मैं आपको बताता हूं एक और चीज, few months back we achieved we were very close to 1 ton of open interest। 1 टन का ओपन इंटरेस्ट के पास में पहुंच गए थे हम लोग। 1 टन गोल्ड में बहुत बड़ा होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 kg 10 kg 100 kg, 1 टन वी राइट। और उस समय भी मार्केट मेकर्स बहुत अच्छे से अपने कोट्स दे रहे थे। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए, क्या मैं जब सौदा करना चाहता हूँ, क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एंट्री और एग्जिट का, मैं बोलूंगा आप 110%, 110%, कोई Yes, दिक्कत नहीं। yeah. Thanks a lot, sir. Thank you, Hitesh sir, for a wonderful presentation. नॉर्मली थैंक यू। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ तक कि क्लाइंट बोलते हैं किसका प्रेजेंटेशन हितेश सर का, लेट्स मैं तो ज्वाइन करूंगा ही करूंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स थिंग फॉर योर पेशेंस। लेट्स वी वाइंड अप द वेबिनार ओवर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। थैंक्स।